Hello, a very good afternoon to all of you. Today, on 14th November, on the occasion of this special day, on this day we celebrate Children's Day and the birth anniversary of our Pandit Jawaharlal Nehru, the great leader. So, hope you all enjoy your this special day and hope you discover the new wonders, make unforgettable memories, and find happiness in the smallest thing because children's find happiness in the smallest thing, like they are playing these games and we do this childish behavior kind of things, so it makes us happy. So it's something like you are loved beyond measures in these things. So enjoy your day, stay, keep your child alive in yourself. Don't be so mature enough. This world requires some of the immaturity too. Enjoy your day. So let's begin with today's The Hindu. So we have today total 8 articles. So we'll be going to discuss this all articles in detail. So we have 8 articles today, and let me introduce first. On page number 8 we got this article, surprise spike. So this article is related something with inflation. So on this day, on this month, last month, food inflation was rise and over affecting affordability and access to essential food. So why this happened and how, what are the effects, we will be going to discuss in this article. Okay, let me just tell you this. This photo is something related to this Pandit Jawaharlal Nehru and this Congress president, Purushottam Das Tandon. This peak was captured in 1957. आज के हिंदू में आई ये पिक. So this first article, spike, surprise spike. Second article is related with municipal corporation tax revenue share rise in recent year. So, how municipal corporation tax gives shares in tax revenue, how it corporates and how it works. So there are different types of shares like property tax, entertainment tax, etc., etc., vehicle tax, import export tax. So this all we will read in detail in this article on page number 9. Defense Space Agency conduct tabletop exercise. Defense Space Agency of India, ASAT, anti-satellite, ISRO, Indian Space Research Organization, and DRDO, Defense Research and Development Organization. These three agencies. We have more agencies which are some private, which are some owned by government. We are all going to be discuss what they do, how they perform, what are the focused area, and what are the outcomes of these agencies in this article. दिया नहीं है पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है. I will be going to discuss them in detail. So on page number 14 we have an article related to Indian Ocean dialogue between USA and India. So to it going to be held today. Inaugural is something like it's something a ceremony type, new project or new term, new deal. So it is happening today on 14th November. On page number 16 we have a next article, unwidely first draft at Baku set 2030 goal of 5 trillion for climate change action. So first draft at Baku. Baku is a city in Azerbaijan, and what are the key terms
what are like who are our participants, what are the objectives, what are the going innovations will be going to take in this article. We will be going to discuss everything in detail. India Saudi defense cooperation expanding. India Saudi defense cooperation is advancing to many different ways, like Al Mahad Al Hind naval exercise, defense dialogues, जैसे 2019 में फ्रेमवर्क डायलॉग हुआ था इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच, मिलिट्री ट्रेनिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, manufacturing of defense equipments in Saudi. So we will be going to discuss in this article. And one of the last articles, today's last article will be this: India tea sugar export raise sustainability concern at home. So why this happened? Like why India's increasing tea and sugar export have raised some concerns. There will be some factors like domestic supply, pricing, and global market conditions. So एक wholesome summary दे चुका हूँ मैं today's Hindu, and keep yourself happy, enjoy this day. So let's begin. So as you know, I'm back after a long period. So we follow pattern, like we will going to read this article first, and then I will share you some background details. Surprise spike. October inflation pace surpasses expectation, dashing rates cut hopes. India consumer price have gained fresh momentum over September and October, rendering the tangible softening in inflation to pace below the often median target of 4% in 2 months, preceding them a fleeting reprieve from 3.65% in August. Retail price ride has had hit a 9-month high of 5.5 in September. So what is consumer price? So it is an average change in retail price paid by consumer over some goods. जैसे एक गुड हुआ, कुछ एक्स वाई जेड, जैसे हमने खरीद लिया एक पेन, मान लो एक पेन हुआ, तो उसकी होलसेल प्राइस होती है, पायलट V5 मैंने खरीद लिया, उसकी होलसेल प्राइस है 55। ये बनेगा, डेवलप हो, इसकी जो मार्केट में आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा शॉप में वेरियस, एंड इसकी प्राइस हो जाएगी 65 रुपीज़ इन ईच शॉप. And when the customers will go to this shop to purchase this V5 pen, Pilot V5, तो ये इनको कंज्यूमर प्राइस, जो कस्टमर प्राइस होता है, वो रेट में दिया जाएगा, रिटेल रेट में. तो ये जो दोनों के बीच का जो अंतर है, उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कस्टमर पे करता है ऑन द टाइम, ओवर द टाइम फॉर गुड्स. सो आर्टिकल में बता क्या रहा है, फ्रॉम 3 in August रिटेल प्राइस राइज हैड हिट अ 9 month हाई. मतलब यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की होंगी, इसलिए उन्होंने जो इन होलसेल और रिटेल के बीच का जो अंतर है, वो इस बार राइज किया है. सो टू बी क्लियर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी, सबको तो पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी है उनकी. सो monetary policy, let me tell you what is monetary policy. So it is a tool
ऑफ आरबीआई, लाइक जो इंटरेस्ट होता है वो मेजर करने के लिए। इंटरेस्ट रेट मेजर कैसे करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वो होता है रेपो रेट से टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। व्हेन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन हाई होता है तो आरबीआई इसका स्पेंडिंग इंक्रीज करता है, और व्हेन इट इंक्रीज द स्पेंडिंग टू हेल्प टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, जैसे मार्केट से पैसा देना और सिक्योरिटीज या बॉन्ड खरीद लेना। जब मार्केट में पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन घटेगा। A sharp surge in vegetable price, particularly tomato, from the one honest festival packed month of October। यार टमाटोज तो यार 100 रुपीज़ किलो चल रहे थे, ओनियन 120 रुपीज़ के जी, लाइक very high prices these days. Oil prices next 2 year decline has stock anticipation that had the inflation may end up higher than September. However, the consumer price index for October beat all economists' projection by wide margin to rise 6.2%, the highest since October 23 when it was up to 6.8. So this article is related to food price and etc etc, which is not that much important, like जितना बड़ा है हमने वो enough है। Food price, vegetable price boomed. What is food inflation? The food price rise over time, affecting the affordability, affordability and access to essential food। जैसे कोई चीज़ खरीदने हो 10 रुपए की, बाद में ये 100 रुपए की हो जाए तो अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, तुम खरीद नहीं पाओगे वही चीज़। और व्हाट आर द इफेक्ट, लाइक हाई कंज्यूमर कॉस्ट, और इससे होता है क्या, पॉवर्टी इंक्रीज होंगी, गरीबी इंक्रीज होंगी, और गरीबों को खाना नहीं मिलेगा, दे विल फूड इनसिक्योरिटी होगी, सबके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा। सो व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर दिस? अभी इतनी प्रॉब्लम्स बता दी है, तो सॉल्यूशन क्या है? सो टू इम्प्रूव दिस वी हैव टू मैनेज द प्रॉपर सप्लाई चेन। जो मार्केट ए से बी जा रहा है तो इसके बीच कोई वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर ना हो, या ये जो मिडल मैन होते हैं वो ना हो, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो, गवर्नमेंट फार्मर को सपोर्ट करे, पॉलिसीज लेकर आए ताकि जो फूड इन्फ्लेशन हो रहा है वो ना हो। जो फूड जो एग्रीकल्चर से लेके एपीएमसी मंडी में जाती है, फिर वहाँ से उसका एक सर्टन अमाउंट होता है जो किसान भाइयों को पे किया जाता है, उसके बाद वो सब्जी या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मार्केट में आती है हमारे पास सेल होने के लिए। तो इस बीच कोई गफला ना हो, वो देखा जाए। एंड दिस इज़ ऑल मोर देन इनफ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ लिया हमने, लाइक इट इज़ मेजर रिटेल प्राइस बाय कंज्यूमर। आरबीआई रोल क्या होता है? आरबीआई रोल है कि इट आरबीआई रोल है इट मैन मॉनिटर्स सीपीआई, इन्फ्लेशन, प्राइस स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी देख लिया था, एडजस्ट द इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट, रेपो रेट, या फिर कंट्रोल इन्फ्लेशन, स्टेबिलिटीज प्राइस, और इन्फ्लेशन टारगेट देख लिया कि लाइक आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट क्या रखती है, 2 से 6% के बीच में, ये रेंज में हो तो भाई सब सही चल रहा है। तो लेट्स गो विथ नेक्स्ट आर्टिकल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स रेवेन्यू शेयर rise in the recent years. Okay, let's read the article first.
and then we'll discuss about the background details. Corporation in southern states. Important नहीं है southern या north या कुछ. We just have to keep in mind that पॉलिटी का एक टॉपिक है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टैक्स रेवेन्यू शेयर्स. पॉलिटी का एक है टॉपिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और टैक्स रेवेन्यू है इकोनॉमिक का. तो इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाए कि ये दोनों टॉपिक कवर हो. In financial year 24, municipal corporations in India are estimated to generate 50% of their revenue from own tax fees, user charges. A further 25% comes from a revenue grant provided by the central and state government. The remaining portion comprises rental income, compensation, and investment income. According to the recent Reserve Bank of India (RBI) report, the report of the municipal finance shows significant improvement since the first edition released 2 years ago. The latest report examined the fiscal position of 232 municipal corporations from 2019-20 to 2023-24. Budget estimate. Okay. The scope of the report have been expanded to include more municipal corporation. Chart 1, Chart 2. ये राइज बताया रेज बताया गया है कि ओन टैक्स रेवेन्यू, ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू और ट्रांसफर्स. तो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है. बैकग्राउंड डिटेल्स पढ़ते हैं. ओके. सो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टैक्स कैसे कलेक्ट करता है. जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हुआ. इट इज़ अ मेजर रेवेन्यू सोर्स ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी यू पे योर प्रॉपर्टी टैक्स. लाइट का बिल वगैरह होता है, या फिर वैल्यू ऑफ अ लोकेशन, योर प्रॉपर्टीज, लैंड size. This all is collected annually and from the property owners. जिसकी प्रॉपर्टी है उससे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, लैंड साइज, द electricity they use, the water consumption they use. This all is a property tax. फर्स्ट प्रॉपर्टी टैक्स सबसे ज़्यादा इनकम देती है. सेकेंड एंटरटेनमेंट टैक्स. सो व्हाट आर द एंटरटेनमेंट टैक्स. मूवी टिकट्स, मूवी देखने हो जाते होंगे आप लोग, मैं तो नहीं जाता. मूवी टिकट्स, उस पर टैक्स लगता है. कहाँ पे कोई मॉल में या कोई कॉन्सर्ट होता है उस पर टैक्स पे करती है सर. जो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है वो भी टैक्स पे करेगा. जो कॉन्सर्ट में शो करने वाला है वो भी टैक्स पे करेगा. और जो आप लोग टिकट खरीद के जाते हो उस पर भी टैक्स कटेगा. सो दिस इज एंटरटेनमेंट टैक्स. एडवर्टाइजमेंट टैक्स. आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, billboards, hoardings are all the contribution to municipal revenue. Professional tax is collected by some business operators, then working in IT people, जिनका कोई इन्वेस्टमेंट हो उनका in that area. Vehicle tax. In some cities, tax and vehicle registration and parking fees also contributed. Sorry for this handwriting, I don't have a pen. I use a cursor, mouse cursor to draw this. So this drawing is some shitty thing. Okay, so I'm sorry. Entry tax. While phased out in many cities, some cities will charge entry tax on entering of a good. Entering of a goods, याद रखना है ये. जब कोई और स्टेट से गुड एंटर होता है तो उस स्टेट को भी टैक्स मिलता है. जैसे मैंने टीवी बनाया, मैं बेच रहा हूँ, और फिर ये जो खरीद रहा है इस स्टेट में, तो वो टीवी का टैक्स इस स्टेट को मिलेगा जो स्टेट ने इसको बेचा.
पर जहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है और ये इसमें आया है तो यहाँ पे भी एंटरिंग टैक्स लगेगा। ऐसी कोई ऐसा कुछ है फंडा। डिफेंस, so let's go with the next article, article number 3. Defense Space Agency अंतरिक्ष अभ्यास 2024. So in this, let first read this article. Defense Space Agency conducts tabletop exercise. The Tri-Service Defense Space Agency has conducted in its maiden tabletop exercise अंतरिक्ष अभ्यास 2024. याद रखना ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि अंतरिक्ष अभ्यास क्या है. It is a space tech related to some space agents aim at bolstering strategic readiness in Indian Armed Force in domain space warcraft. The 3 days exercise concluded on Wednesday. So, what is Antariksh Abhyas 2024? So, it was an operation in the space uh, to from it to protect us from some threats from space-based asset and service. So, Ministry of Defense conducted India's first ever space exercise in New Delhi, and it provided us a better understanding operation happen in the space. Uh, Armed force will be going to use this Antarish for border infiltration, armed movements of the uh, enemies, missile launches, and many various things. So the discussion highlighted the importance of monitoring and protecting critical assets, maintaining situational awareness, and encouraging contested space environment, defense ministry said. So what are the objectives? जैसे हम potential space security scenarios देखते हैं कि terrorism increase हो रहा है या कोई border cross करके अपने देश इंडिया आ रहा है, तो इस पे निगरानी रखने के लिए स्पेस का यूज़ किया जाएगा. पार्टिसिपेंट इसमें कौन कौन है? तो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, and Indian Armed Force are collaborated in this. That's it. इतना ही था ये आर्टिकल में. So today's fifth article, inaugural Indian Ocean dialogue between US and India to be held today. So ये न्यूज़ तो अभी कल आएगी कि क्या हुआ क्या नहीं, पर in short पढ़ लेते हैं. Deepening the ongoing cooperation over the Indian Ocean region, India and US are set to hold inaugural US-India's Indian dialogue on Thursday. US Deputy Secretary of State Kurt Campbell and Principal Deputy National Security Advisor John Finner will take part in event virtually. They were originally scheduled to travel to New Delhi on November 13th, 14th, but have to change plan due to flight issue. ये तो नहीं था. The two sides will discuss measures to promote security and prosperity throughout the Indo-Pacific region, the US State Department spokesperson said in the statement. तो देखा जाए ये कर्ट कैम्बल है एंड इज़ कमिंग ऑन 13-14 और उनका फ्लाइट थोड़ा डिले हुआ है, पर इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया US स्ट्रेटेजी डायलॉग
तो व्हाट कैन बी ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सोचो कि लाइक ऑब्जेक्टिव हो क्या सकता है। जैसे कोऑपरेशन इन डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, रीजनल सिक्योरिटी, या फिर कोई कंसर्न रिलेटेड बात हो जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 7-8 पॉइंट के बाहर इंटरनेशनली कुछ बायलैटरल टॉक्स होते नहीं हैं, तो ये याद रखना हमेशा। और पार्टिसिपेंट जो है कर्ट कैम्बल, हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल, डिफेंस लीडर, इस मीटिंग में उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, दे कोलैब एंड हैव अ टॉक। और क्या क्या बातें हो सकती है, जैसे थोड़ा दिमाग पे सोचो कि जैसे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज, जैसे एआई पे भी डिस्कस कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोजन, अभी बीच में सेमीकंडक्टर चेन्स, सप्लाई चेन, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है एंड दे डोंट वांट टू बी specific to some countries for this lithium ion and semiconductor chips. So जागरूक हो रहे हैं अभी एक एक कंट्री, जैसे जैसे रशिया में और यूक्रेन के वॉर चल रहा है। इवन इंडिया हैज स्टार्टेड आत्मनिर्भर भारत, इंडिया मेड schemes, self reliant, pro these all projects and schemes, make in India initiative. So this all is related to this dialogues, and let's see what happens. The comprehensive global partnership, will it strengthen the both countries' roles in promoting peace in the region of Indo-Pacific region? यहाँ पे है अमेरिका और ये हमारा प्यारा इंडिया, ये इंडो पैसिफिक रीजन। अरे यार, ये छोटा आर्टिकल है। इंडिया सऊदी डिफेंस कोऑपरेशन एक्सपैंडिंग। So, the defense partnership between India and Saudi Arabia has witnessed several firsts in the past few years. External Minister Affairs S. External Affairs Minister S. Jaishankar said on Wednesday, nothing that the cooperation had now expanded in the field of defense industries and export. During a meeting, both sides discussed avenues to strengthen the strategic partnership between India and Saudi Arabia in areas including trade, investment, energy, defense, security, culture, and consular matters. The Ministry of External Affairs said in a statement. They also exchanged views on the regional and international issues. So, defense manufacturing, Saudi has shown interest in partnering with India defense manufacturing sector, exploring technology transfers, Make in India initiatives. Okay, and military training. Saudi officer received training at Indian defense institutes such as example National Defense College in expertise in counter terrorism, cyber defense, and strategic planning. यही है, और कुछ है नहीं। ये मैप देख लो आप, ये अजरबैजान है, ये यहाँ पर एक सिटी है बाकू, उसके रिलेटेड न्यूज़ है कैस्पियन सी। Unwildly first draft at Baku said 2030
Goal of 5 trillion for climate action. 2 days into 29th edition of Conference of Parties COP, the first major negotiating text that will be decided in 2 weeks long conclave will be success as outcome. While this has a far from same balance of finality, it lists out the universe of option before 190 countries. They must collectively whittle down. Every country's vote is exactly as important as the other. The most prominent feature of the text, at least 5 to 6.8 trillion until 2030, as called new collective quantified goal of climate finance for developing country to meet their national determined contribution on the various target updated periodically where country specific target action undertaken to reduce carbon emission and substitute fossil fuel energy source with renewable energy ones. So, what is Baku? It is a city in Azerbaijan, and the first draft at Baku refers to the meeting or discussion that took place in Baku, Azerbaijan, which focused on the setting of 2023 economic goal for India. Specifically, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही रीड करेंगे इस आर्टिकल को और समझेंगे. So, what were the objective key point of 5 trillion economic goal? So, objectives were so simple, like boosting economic growth through reforms, investment, and infrastructure development. And the key features were manufacturing, agriculture, technologies, and reducing carbon emission by using renewable resources, green energy, hydrogen energy, बायोमास, बायोफ्यूल्स, यही होगा. और structural reforms, policy reforms, improving ease of doing business, encouraging FDI, for investment, strengthening the financial sectors, trade and investment to boost economic growth and create jobs. यही है और कुछ नहीं है इसमें. Today's last article of today. India's tea sugar export raise sustainability concern at home. Agriculture commodity production in India live in a unique context. High domestic consumption and now rapidly growing export that may benefit producer and consumer, but increasing dependency between different parts of supply chain compromise ecological sustainability. India is one of the largest agriculture product exporter. India export was valued at 53.1 billion in 2022-23, up from 8.7 billion in 2004 to 5. Six-fold increase in less than 2 decades for an economically developing country like India. Export plays a significant role in strengthening economic by increasing revenue, foreign exchange, and transactional option. But the rapid surge in export poses multiple challenges हम देखेंगे background details में, and processing the distribution system in the respective commodities. In the context, it is important to answer the two questions regarding the sustainability of agriculture commodities. First, when can an agriculture commodity be considered truly sustainable? Tell this in comments. When can agriculture commodity be truly sustainable? मेंस का आंसर हो जाएगा इस पर 150 words 10 marker.
The sustainability as such commodity it is just an about economic sustainability which is driven by productivity, ecological and social factor to good governance help build a sustainable production system. So the sustainability of an agriculture depends on a three pillar ecological factors, economic aspect and social aspect underpinned by robust policy underlying all of them. फलाना ढिमका बहुत कुछ दिया है यार इसमें. India, with a large domestic and export-oriented consumption base, offers good example to illustrate the problem of here. इंडिया यार इंडिया शुगर भी डेवलप मैन्युफैक्चर करता है खुद टी भी मैन्युफैक्चर और चाय भी बहुत पीते हैं. India is the world's fourth largest tea exporter and second largest producer, contributing 10% of global export. The later total 188.76 million in kg in 2022, to which valued 641.34 million. इसमें से किसान भाइयों को कितना पैसा मिला? कुछ नहीं. So an increase of 21.47 year on year in volume or and 12.43 year in year value. There is a growing evidence of the stress between being imposed on production system across the tea value chain. Three major challenges: labor concern and estimate 70% of tea plantation are suited at periphery of forest and host of the migratory routes. Elephant need to move around resulting in frequent extra interaction with human and human property damage. India is the world's second largest sugar producer with 34 million metric ton of production, which is about a fifth of the global production. India sugar export grew by 20 to 91% from $1.177 million in financial year 2013-14 to 4,600 million dollar in financial year 21-22 and 64.90 in 21-22. Millets VDI that is not related to article. So let's read background detail. So India's increasing tea and sugar export have raised several concerns. And what are they? Factors like domestic supply, pricing, global market condition. India is one of the world's largest sugar producer and had surge in sugar export. However, they raised concern about potential storage, domestic market, leading higher local price, which could affect consumer. And India's tea export have also increased, but there are worries that rising export could lead to a supply crunch domestically, potentially driving up tea price in India. Price fluctuation. Both sectors face price volatility, yeah, tongue slips, due to global demand, weather condition and market speculation creating uncertainty in domestic market. Government intervention. The Indian government has implemented measures such as export quotas and subsidies to manage the balance between export and domestic availability. So some these are the some concerns like over long-term sustainability of increasing exports, unpredictable weather pattern, labor shortage, and changing of global policies on trade. This all various factors is
related to concerns. So today we discussed total 8 articles, and thank you so much if you are still listening, and happy Children's Day one again. Enjoy your day. Thank you.